done. Can we start the program, host? Priyanka, we're live. Well, with ma'am's permission and Dr. Aruna Broota's ma'am permission, we would like to start the National Career Counseling webinar, which is happening pan-India today. And very, very thrilled and excited to have Dr. Aruna Broota with us. Before we start with this session, I will just give you small information. There is a chat box that you can see under the YouTube icon. In that, you just have to put in your username of your choice. You can skip the email ID and any password of your choice. By doing that, you will be able to put your responses in the chat box. So let us start with today's session. I hope you have enabled all your chat boxes. And I welcome Dr. Aruna Broota once again, Dr. Sapna Rakesh once again for the National Career Counseling webinar organized by IMS Ghaziabad University Courses Campus. Well, before I start, I think I would just like to give a brief introduction. Like, my name is Priyanka Sadhana, and I am heading the Career Development Center at IMS. And let me give you a small walkthrough of what our college and institute is all about. So we started, the IMS group started, IMS Ghazia started somewhere in 1990. And we are so happy to share that we have completed 31 years of experience in the field of education. And we have been ranked #1 consecutively since last 5 years. And trust me, that was not a cakewalk. And once you have this interaction with Dr. Sapna Rakesh, you will get to know the kind of efforts that we put in for our students here. And in fact, for our students, we stay with them in the campus. We also stay with them after the campus, being connected with them. And we have thousands of alumni working across the globe. And they have leading positions. They are the CEO of the organizations, and they are still associated with us. So this is something that we usually flaunt, but we are proud of it. And trust me, this all has been made possible because of our chairman, Honorable Naresh Agarwal ji, of our management team, CA Dr. Rakesh Charya, and CA Vidocharya ji. I'm sure without their support, encouragement, guidance, mentoring, we would have never reached this place that we are heading today. So IMS success definition is dependent upon students' success definition, honestly, because we are happy, we consider ourselves successful if our students are successful. And let me tell you, the students at IMS have different definitions of success. To some, it is all about getting a job of 16 lakhs per annum, or somebody who is happy with the better profile rather than the package. Somebody who wants to work as an entrepreneur, so he's doing some activities and startups in our eCell, or somebody who wants to pursue higher education and be a part of teaching in academia and do mentoring. So the definitions of success changes, and trust me, this has actually made us, do this transition so smoothly. And this has been made possible because of 6 things that we do in the campus. The very first thing is that we do constant counseling and training at IMS throughout. Number 1. Number 2, we have very active corporate resource center who takes care of the life projects, the internships, the placements, the industry academia contact, because what you study in the book will not give you skills till the time you practice it in the industry. So that kind of opportunities are available, and that is available made by our corporate resource center. We also have various specializations. We have ample number of clubs. We have value-added certifications. In fact, amid pandemic, we rolled out online certifications in our college and in other colleges, and it worked really well because we got the feedback that students are now skilled. In fact, they have started doing some freelancing jobs while sitting at home. And last important thing, all of this has been possible because we do it with a lot of love and care. So this journey of love and care in 2016 had a transition. In 2016, for the very first time, we invited Dr. Aruna Broota in the campus. And it was a game changer. We never ever thought that education is something that has to be customized, because one size fits all approach doesn't work anymore.
All of us have different DNAs, all of us are unique. So we need to do micro handling of these students. And trust me, from that on, Dr. Sapna Rakesh took the lead and started career counseling sessions in our college, in other colleges and universities. And it has become a major extension activity of our college. In fact, it is now a part of education social responsibilities, where I think we have taken this onus on our shoulders to make everybody aware of various career options and suit the career and take the career action that suits them the most. So we have been doing that, and I think we all deserve happiness. So we try to, give a bit of happiness to each of the students there. So we do that carefully by identifying some career spots of all these students. So we do some psychometric testing. On the basis of that, we get to know what are your interests, what are your values, what are your personality types, what are your skills, what is your knowledge, what is your aptitude. And on the basis of that, then we figure out a career that serves you or that gives you a lot of joy. Say, for instance, there are certain careers where you need very technical skills. In academic language, we call it person job fit theory. For instance, if you hire a doctor and doesn't know how to conduct a surgery, or an architect who does not know how to make a bridge or a building, so many will lose their lives. So here, your hard skills are very, very important. There is no compromise on that. But there are certain organizations who go for person organization fit theory, wherein you have to match with the organizational values and culture. Say, for instance, if you are a teetotaler and imagining you are working in an organization where they have a lot of parties on Saturdays and Sundays, maybe you don't want that culture. So your culture should match with the organizational culture. If you want to work with the limited team size, so maybe a team size of 5 or 10 would go for you, but you are comfortable working with everybody, then you can work in any department with n number of people. So for all of this, there are, different personality traits. The idea is that you should go for that particular thing that really suits you. But there is a trick here, and there's some irony out here. The irony is, when we have any family occasion in our family, like a wedding, a birthday, or an anniversary, we probably take months to decide, weeks to decide what will we wear, what is the dress, what would be the color, n number of things. And even boys do it, let me tell you that. But yes, when it comes to career decision, I think we are guided by peer pressure and parent pressure sometimes. So what we would like to say here and reinstate here is that counseling is important, but counseling is also important for the parents as well as for the students, so that you figure out a win-win situation for both the parties. Say, for instance, you might have heard about R. Madhavan, the guy who was there in Three Idiots. So he wanted to become a wildlife photographer. So he certainly convinced his parents. But let me tell you about the personal life for R. Madhavan. He never wanted to become an engineer. His parents forced him. Then he joined NCC. Then he took some coaching classes. He was a great orator. He won various public speaking platforms award. Eventually, he went into modeling and then into acting. So gone are the days when you think that, this is one stream that I have taken, I need to stick to it. Now, career transitions are very common and it's very logical too. In fact, you would love to hear that in our mid 30s or mid 40s, people are in mid career crisis. They realize that what they are doing doesn't suit them anymore. This is not the life they wanted to live or they wanted to have. And then they think of a change. So the early, the better. But whatever happens, I think all of us are the products of various circumstances and events that surrounds us. So we are the products of that. I think in India particularly, we see a lot of negativity around. So the idea is to take the positivity in you and reflect it back. And you'll be happy to hear this fact that as a toddler, maybe when you reach 5 years of age, you hear the word no 40,000 times, and you hear the word yes 5,000 times. So you hear the word no 8 times more than yes till the age of 5, when your brain is developing the maximum, right? So we are the product of what is around us. So we are not at fault. The point is that we should be better each day. We might not aim for perfection, but progress is definitely something that we should aim for. And another problem is, in the system, we have a lot of I's in ourselves.
I want this. I want to buy that. Lot of I's. I expect this. I was not happy yesterday. So these I's are actually those I's which are surrounded, and some of these I's are also iPod, iPhone, an iPad, and our parents says I paid. So that is one irony of life too. Now the world is moving from I to you and to we. So the culture is very collaborative. And this is what our Prime Minister is calling, that youth is all about skill development, where we should learn from each other. And I would also say that since we are talking about youth, there is one thing that I would like to accentuate, that all of you are Generation Z. And this youth is all about work-life balance. So you want to live a life where you enjoy your work, and you also want to live a life when you get back home and you enjoy your family life. And that reminds me of one speech which was given by Brian Dyson. He was the former CEO of Coca-Cola, and he just mentioned in his 30-second speech two things. One thing was that you should always reach your work in time. Second, whatever you do at your workplace, you should do it with maximum effort, and you should do it effectively. So in your working hours, you should be most productive, effective, and efficient. Third, you need to get back to your family in time, which is so true. And he also said in his speech that there are 5 balls that we are juggling with. And the first ball is the ball of work. The second ball is the ball of family. Third, your friends. Fourth, the spirit. And fifth, your health. Now you will realize in your upcoming careers that work ball is made out of rubber. It bounces back. So even if you have lost an opportunity in your career, it's perfectly okay. You can definitely regain it. You will avail opportunities. But the point is, you should be in a position to avail. In fact, these days, I would say in pandemic, we have realized life is not about availing opportunities. In fact, it is all about creating opportunities. And yes, the other 4 balls, they are made up of glass: your family, your health, your spirit, your friends. So if that ball breaks, any one of them, either it would de-shape, or there will be a crack, or obviously it will be destroyed. So we have to be very careful with these 4 balls as well, and the 5th ball, and that work-life balance should really work it out. So what we are trying to say here is that we should all be celebrating our work, and we should all be celebrating our life, and this is the right way of living a life. So with that celebration, I am now taking this session forward to introduce Dr. Aruna Broota, the renowned psychologist. First of all, she does not require any introduction. You put her name on Google, you will see n number of achievements that she has done. She has associated with private organizations, government organizations, and she's conducting regular counseling training workshops for the students, for the adults, for the working professionals, for the civilians out there. And let me tell you, she's one lady who's inspiration to all of us. I think in every lecture when we listen to her, this is the most awaited event of the year, where we look forward to be hearing her and learning so many insights. Thank you so much, ma'am, for coming and gracing this event. Thank you so much. God bless you. Thank you. Now I take this opportunity to welcome our beloved director, Dr. Sapna Rakesh, ma'am. Now, ma'am has been in education industry since last 28 years. And let me tell you her track record. Wherever she has worked, the faculty, the staff, the students, all of them has witnessed the maximum career progression under her guidance. So we as a faculty have also learned under her mentorship, and this is possible because she's a great academician. Her journal papers are published in various international publications. She's a great researcher, academician, consultant, and most importantly, a great person altogether. She clearly leads by example. And let me tell you, to each one of you, sorry ma'am for mentioning it, yesterday, she was here in the campus till 8:30 or 9 o'clock for this particular session that we are having today.
and there was nobody. She was working entirely at her own. So that's really nice. And I think she has made that culture, and that culture has become very contagious and infectious. So we try to follow her footsteps, and this is how we progress. So thank you so much, ma'am, for arranging this session for each one of us. Now, without not taking this session or making it exaggerated, I would now invite Dr. Sapna Rakesh, ma'am, for the welcome address. And we are looking forward to hear wonderful insights from you, ma'am. Over to you. Thank you, Professor Priyanka Sadhana. Boys and girls, ladies and gentlemen, teachers, faculties, principals from various schools who are joined into this program. This is one occasion where I also look forward to welcoming Dr. Aruna Broota. I do not have many mentors in industry to be honest. And why I look at? I do not look at because of the professional competence of which she has become an epitome in her own area. I look at her because she is a reflection of what you can become if you are passionate about something. और अगर आप शिद्दत से अपना काम कर सकते हैं, तभी आप डॉक्टर अरुणा ब्रूटा बन सकते हैं. और इसलिए मैं डॉक्टर अरुणा ब्रूटा का हर साल इंतजार करती हूँ, और इसलिए मैं इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं, वही हम दिखा रहे हैं, वही हम महसूस कर रहे हैं, वही हम जी रहे हैं. क्योंकि किसी भी काउंसलिंग सेशन का, किसी भी बातचीत का ये जो आयाम होता है, जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो सच्चाई होती है, वही उस बात की एक्चुअली महत्व होता है, वही उस बात का सार होता है. और उस लहजे से मैं डॉक्टर ब्रूटा आपका हमेशा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ. I welcome to this virtual virtual confluence of generations. You are one generation, Professor Priyanka is another generation, and there are children who are third generation. The three generations here and friends, हम अगले मैं आपको मात्र 10 मिनट संबोधित करूंगी, and after that you'll be addressed by Dr. Broota only. So have patience to listen to what I'm going to say, because I'm a I would actually I would be speaking what I've heard from her in past several years. So ma'am, pardon me for that. That would be glimpses here and there of what you say. The students, this session we organized for class 11th and 12th students. And let me tell you why IMS Ghaziabad does that is because as an educational institution, we are dealing with the undergraduate population of this country. At IMS Ghaziabad, we have BBA, BCA, journalism and mass communication, we have biotechnology, and then we have engineering sciences also in various fields. So we have a huge undergraduate population who come to us. We want to be relevant to the students, to our stakeholders and parents today, not only when you come to the campus. And I'll just refer to, I go for counseling across about 20, districts in the state of Uttar Pradesh. And, we get 1,000 students in these counselings. And when I talk to them, I find one thing missing. And that one thing is that everyone is looking at the outcome. Nobody is looking at who am I and what can I become? And I think today is the time to focus on who you are and what you can become. And that's what, ma'am will be guiding you. So do not worry about 98% to 95% to 90% that you're looking at, because that you definitely would get. You see that if you adopt the right methods, but before that, for the output, the right method is one thing, but for the output, understanding the relevance of the output and why do we want that is equally important. So outputs are important, but along with that, who is attaining that output? I mean, all of you would have heard about the story about a student who got about 98.4% marks in CBSE board examination.
And the boy went in depression because there was a pressure from the family and the boy that why didn't you get 98.6% marks which the previous year topper had got. Right? So the pressure could have been from family, the pressure could have been personal, the pressure could have been from anywhere. But the fact is that what would that 0.2 more percentage do to the person? Okay, why are we in that race? Career, friends, is far bigger than any percentage. She spoke about R. Madhavan. There are many more. I mean, there is a plethora of people. All right, you might have heard about Veer Das. Veer Das once, on a social platform said that he could not even make a decent first division in his standard 12th examination. What is it? Is it a catastrophe? Sab kuch khatam. Percentage nahi aayi to khatam. And this is where, I want you to think and understand that. But then, did he not make a career? I mean, Veer Das is a synonym with laughter today. Veer Das goes all across the world making people laugh. And not only Veer Das, I mean, you have a long list of people who have been successful. I mean, look at this story of this girl, Manya Singh, the type of background she's coming from. She ran away from a specific place because she wanted to save herself. And then that family also supported. They also joined her. And, doing that and then deciding to become a model. And from that model, deciding to see, becoming Miss India is a part of the journey. Why she is glorified is not because an auto rickshaw driver's daughter has become Miss India. I think there is more meaning to it. And the more meaning to it is wherever you come from, whoever you are, God has given you innate capability to shape your dreams. So you dream correctly. Do not live others' dreams. This is what, I want to convey. Have your own dream. If you have your own dream, whatever Priyanka ji was saying, कि काम में आप टाइम से भी पहुंच जाओगे, काम में आप खुश भी रहोगे, काम आप अच्छा भी कर लोगे, काम में आप सक्सेसफुल भी होगे, और इन सब का नतीजा क्या होगा? आपका पैकेज, जिसके लिए हमारा आज का समाज मर रहा है, आपका पैकेज अपने आप अच्छा होगा. पैकेज के पीछे मत भागिए. ये समझिए कि आप वो चीज करें जिसमें आपको मजा आए, क्योंकि मजा जब आएगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे. ये एक बहुत सामान्य बात है, बट मुझे लगता है हमारे सामाजिक परिवेश में इस बात को हमको, शिक्षकों को, छात्रों को, बच्चों को, अभिभावकों को, the parents, the teachers, the schools, the faculty and the students, all of us have to develop a culture of exciting, of giving birth to new dreams, because those dreams will get you good packages. And this is one thing. And second thing that I want to say is that careers are not a product of the degree or the college to which you go. Careers are long-term decisions. And this is where I think, Dr. Broota, you would agree that at this transition journey, at this specific journey, which we also call watershed point. I don't know why do we call it watershed point, because watershed point continues in life, throughout. And it's not about only your 12th result and your 12th admission. What is important for all of us to understand is that career is where you see yourself after 10 years. Career is where you see yourself after 20 years. Career has to be a reflection of what you want to do. And that would be based on your strengths, on your own passion and your ability to do it, which would come from the strengths that you have and some weaknesses that you might have to work on, build upon. Look at Hrithik Roshan. Hrithik Roshan used to stammer. He used to stammer. वो हकलाते थे, अपनी बात नहीं कह पाते थे. और आज आप उनके डायलॉग सुन के महसूस करते हैं, आपके अंदर उनके डायलॉग जाते हैं, आप उनकी तरह एक हीरो की तरह फील करते हैं, आप उनकी तरह एक रोमांटिक लवर की तरह फील करते हैं, आप उनकी तरह जब वो बोलते हैं तो आपके अंदर भी पेट्रियाटिज्म घुसता है.
तो वही ऋतिक रोशन, he could have decided, right? He came from a background which comes from film industry. That is one thing. But there are so many of them around who come from that background. Who makes it there is the person who knows what he wants to do. So first thing is that clarity. At IMS Ghaziabad, we lay a lot of importance on this particular facet of students. Whatever courses we run, we know that if you're doing a BBA, that really doesn't mean that you'll become a manager tomorrow. You might become a social entrepreneur. हो सकता है आप हैंडीकैप लोगों के लिए काम करें, आप महिलाओं के लिए काम करें, आप समाज के उत्थान के लिए काम करें, या हो सकता है आप मोदी जी के लिए काम करें. आप कोई भी काम कर सकते हैं. And this, you know, in the accumulated experience of 30 years at IMS Group, we understood. And how we understood? We have a management committee which has people from politics, Mr. Naresh Agrawal, from media, Mr. Sudhir Shukla, from industry, Mr. Pramod Agrawal, then a chartered accountant, Mr. Rakesh Charya. So there's this whole gamut of people, you know, who gave us the idea that understand student as a person, not as a student of the specific degree in which they are enrolled. And you know, so this has given us a direction where today IMS Ghaziabad offers about 36 specializations, about 15 specializations in BBA, about 12 specializations in BCA, 4-5 specializations in B.Sc, 7 specializations at international business course and master's program, and about 6 specializations at our journalism program. Now, see, why I'm saying this is because when a student enters, he enters with a different mindset. But when he passes out with a focus on the career. And this is what I want each of you who are in standard 11th and 12th to understand, that career is a far bigger decision than the choice of a stream and the marks in the college to which you would be going. All these decisions you would take in respect of, do you get an opportunity? Are you getting an opportunity to hone, to work upon your strengths and to minimize your weaknesses? So this is the, this is one thing that I want to tell you. And second thing that I want to tell you is that this is the right time for you to be here. And this is the right time for you to be here is because, you see, fortunately, the board examinations are from 4th of May. So there is still a lot of time. There is still a lot of time. You would be able to still prepare yourself. You would still be able to deliver, effective exam performance if you're clear on these things. जो भी चीज कर रहे हैं, वो आपकी जर्नी में ऐड हो रही है. हम ये कह रहे हैं कि आप अपना इंटरेस्ट देखिए. दैट रियली डजंट मीन कि आप सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए और आपको एक्टिंग में मन लगता है तो आप एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए, या गाने में मन लगता है तो गाना शुरू कर दीजिए. आज आपका काम क्या है वो आपको डॉक्टर ब्रूटा बताएंगे कि किस तरीके से आप स्पेसिफिकली अपना करियर बना सकते हैं. हम सिर्फ एक चीज कहेंगे, डरिए मत, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कीजिए और काम करते रहिए. रिजल्ट्स वुड बी फैबुलस. हमने आईएमएस गाजियाबाद में ये देखा कि स्टूडेंट अर्न वाइल लर्न करके हमने एक क्लब चलाया. और अर्न वाइल लर्न में आपको छोटा सा बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर जो आती हैं वो कंफ्यूज्ड आते हैं, और जब हम उनको मौके देते हैं हम कहते हैं चलिए आप काम करके देखिए. You start working on what you want to do. There are students who are working on different projects in our campus. Like there are students who are working on website designing. There are students who are designing all entire stuff of IMS Ghaziabad. And in this journey, all these students, they also get some small pocket money from the institution, which we call you earn while you learn. All right. And these students, before they pass out, they decide that I'm going to do this, I will not do this. So there is a photographer who might emerge from a BBA program. There is a choreographer who might emerge from B.Sc program.
there is a teacher, there's a professor, there's a researcher. Different people will emerge from different programs if the students are rightly targeting their careers. And the last thing that I want to say, Dr. Broota, is that parents' support in career identification is as important as parent support in sponsoring the fees. Do not think as a parent you can buy education and make your child something. You might spend 45 lakh rupees putting your son or daughter in a program for law. But if the child doesn't want to do law, 45 lakhs will not make him a good lawyer. And even if one would, they might make money, but they will lose happiness. So it's very important to identify the right careers, to be in the right place, which lets you discover yourself, because education is a journey of self-discovery. That's how education is not about developing the skills. That is a secondary aspect. The skills would come up if I self-discover myself. If I get to know what am I supposed to be good at, where can I maximize my strengths and minimize my weaknesses, and that will be the creation of a happy society. And all of us friends, each of us, the parents, the teachers, the institutions, the schools, the colleges, we have this onus of not only creating right skills, but we also have the onus of creating the right citizens who are happy, who are not frustrated, who are excelling in their own field. So, Professor Priyanka, this is, I think these are a couple of things that I wanted to talk to the students. I hope it's a relevant takeaway for children, and I think we can have we can now leave the audience with Dr. Broota, because I'm sure, like us, they are also waiting for Dr. Broota. I'm not seeing her video on, so can we host? Can you contact? Can you please restart Dr. Broota's video? Meanwhile, friends, let me tell you that I miss Ghaziabad as Priyanka till Dr. Broota comes. That gives me some mileage to speak a little more. Bhavna, can you please start a quick PowerPoint presentation through which, some slides about IMS Ghaziabad, through which, I would like to take our audiences for today. Friends, it's my duty to introduce you to IMS Ghaziabad, because being director at IMS Ghaziabad, it is my, can we go to the first slide, Bhavna, and then, quickly we'll take you all through to the journey of IMS Ghaziabad. You must be aware of this amazing institution in NCR. So we have more than 2,000 students in this campus with about 30,000 alumni, and we have a student of intake of about 1,200 students every year. All right, and the institution is full of toppers from CCS University. Every year, IMS Ghaziabad is one institution which has maximum toppers at CCS University from among 900 institutions of CCS University. All right, and then, but another thing that I told you, we have about 39 specializations across the courses. And those, some of the specializations may sound very, very weird. Okay, because what is a super specialization in data sciences doing with a BBA program? But we know that there is youth who's oriented towards data sciences and who's in management programs. So why not to give them that opportunity? We have a very interesting specialization called family managed business and entrepreneurship, because we realize that a lot of students go back to the family business. So why not to train them on how family businesses are conducted, so that when they go to their family back, when they interact with their parents, they do not have this issue. Rest of the things, so we have, Bhavna ji, can we take me quickly through the PowerPoint presentation? We have a lot of placements and internship, so you'd be surprised. Dr. Broota, undergraduate students after 3 years now get packages of about 10 lakhs. We wonder, what were we doing? हमने क्या गलती की थी कि हमको इस तरह के मौके नहीं मिले? But I'm also very happy that those students, who hone their skills, they actually after undergraduation get those type of packages. There are students going all across the globe, from the campus, and some of them in Middle East, we are very, very strong. Our undergraduate students, we have an alumni chapter in Dubai, where I think about 30 students from IMS Ghaziabad are working from this campus only, and of course from other campuses. These are some of the different companies where from
from our students get placed. Bhavnaji, can we quickly go through the slides? You see, this is a slide on specializations. I told you about 39 specializations that we have at the campus in different programs. You are seeing them on the screen. I just thought that you should be aware of, what we do with the students. Now, so these are students who were placed for about 16 lakhs. I'm not tempting you with 16 lakhs. I want to be very clear. I want to tell you that if you are able to, so these are how many students you're seeing on the screen. You're seeing about 18 students there. That's it. Whereas we pass out about 800 students every year, right? So which means that some of you would do very, very well in a specific field. Now, these are, again, students, who were placed. Bhavnaji, can we go a little quick? Because I want Dr. Broota to start speaking now. Okay, these are some big companies, TCS, Wipro, Infosys. Then another very important thing, which I think is very important to us, is we have 22 clubs, which are completely driven by the students. So students come to us and they tell us that this is what I want to do. And we tell them, all right, go ahead. Tell us what do you want to do this. And believe me, for some clubs, the students have been also able to generate huge funds for their own. Like we have a very popular MUN. We have one of the best Model United Nations conference at IMS Ghaziabad, where various ministers and ambassadors have been the guests. And students come from different colleges, including some international students. And students generate enough funds that even if you want to give them money, they say, ma'am, we don't need it. That is the joy of, doing something with passion. Then, to expose students, we also have a Earn While You Learn club. And so there is a philosophy through which we have been able to, develop these careers for the students. And I don't want to go beyond this because this was my duty, to tell you what we do at IMS Ghaziabad. In the end, once again, welcome Dr. Broota to the program. And I can promise you that you listen to her carefully. आपका 10% मार्क्स बोर्ड में बढ़ जाएगा, 100 के बियॉन्ड भी हो सकता है. ये गारंटी मैं ले सकती हूँ. मत बोलो. All right. No, she has some terrific tips and a great experience of dealing with students on that front. So, Priyanka, would you like to once again, Well, thank you so much, Sapna ma'am, for sharing your insights and telling us the real meaning of happiness and how the definition of happiness changes from person to person. And now I would like to invite formally Dr. Aruna Broota on this virtual platform, on this national webinar of career counseling, to address these students with her mesmerizing words and the intellect and the expertise that she carries. Over to you, ma'am. Thank you, Priyanka. And I'm grateful to Sapna ma'am for giving me this opportunity. I don't mind mentioning, I would love to mention that I'm grateful to Rakesh ji also, Naresh bhai also, for thinking of me that I am capable of entering your institute and I'm capable of being here and talking to the students. And hi everybody, hi students. ऐसे मुंह बना के मत बैठो, कोई बात नहीं हुई है. कोविड हुआ तो क्या हुआ, ऐसा बहुत कुछ ईश्वर जी करते हैं जो गड़बड़ हो जाती है. But we are getting out of it now. And we are the luckier children of God कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम ऑनलाइन बातें कर सकते हैं. ऑफलाइन जरा अच्छा लगता है, आप अपनी यूनिफॉर्म्स में आते हैं, ऑडिटोरियम में गप्पे हाँकते हैं. आई कमबख्त बुड्ढी है, बहुत बोलती है, अरुणा ब्रूटा. तो आई डोंट माइंड, ऐसी बातें हम भी करते थे जब छोटे थे. बट टुडे द टाइम्स हैव चेंज्ड. सपना मैम तो अभी बहुत प्रेशर डाल रही हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो मुझे प्रेशर क्यों लगता है? हाँ, पूरा आसमान मेरे लिए अवेलेबल है, पर आसमान के किस कोने में मैं जाना चाहती हूँ यही तो नहीं पता ना. किसी को देखती हूँ कि वो 40 लाख का पैकेज है. अरे किसी को मैं मिली यार, बताऊं आपको, उसका वो मुझे बोले मेरा 1.5 करोड़ का पैकेज है. मैं कहा है, मैं तो बेवकूफ हूँ, फिर मैं तो लल्लू हूँ. बट आई थिंक सपना मैम का एक सेंटेंस मैं चुराऊंगी क्योंकि वो मुझे बहुत अखरा और मीठा अखरा
we were happy. So basic बात जो मैं करना चाहती हूँ कि जब हमारे टाइम पे ये पैकेजेस नहीं थे, she said we were happy and I agree with her that yes we were happy ma'am. लेकिन आज के बच्चों में मैं happiness की कमी देख रही हूँ and हालांकि सहूलतें हमसे 40 times or 400 times या 4,000 times ज्यादा होंगी and लेकिन the children are not happy. They are all the time into something जहाँ पे होड़ है, लटक है, हाय ये होता, हाय मैं ये कर लूं, हाय मैं वो कर लूं, हाय मैं वहां चला जाऊं, चली जाऊं, मम्मी पापा नहीं जाने देते, बड़ी प्रॉब्लम है मम्मी पापा की. सो एक कन्फ्रंटेशन जो आती है वो पेरेंट्स के जो मीडियोक्रिटी से आती है कि उन्होंने जो टाइम देखा हुआ है वो इतनी जल्दी ट्रैवल करके मेंटली आपके साथ नहीं मैच करते, क्योंकि वो आज की दुनिया से डरते हैं, क्योंकि जो अच्छा हो रहा है उसके साथ बुरा भी हो रहा है. And media is getting so quick that we are able to see what bad is happening around us and we don't value what good is happening around us. So we need to understand that. And इसीलिए आज आप बैठे हुए हो, मुझे बुरा लग रहा है कि आप अपने घर में अकेले बैठे हुए हो और ऑडिटोरियम में होते तो सारे इकट्ठे होते और वो बोलते देख 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 उसको, देख कितनी मोटी है, वो कहती है देख 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 वो कितना सुंदर है. सो वो भी एक फन का पार्ट है. बट will this fun take us anywhere? Criticizing, commenting? No, it is not going to. What you need to do is to develop your inner self, develop your personality. अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करोगे तो देखो कहाँ पहुंच जाओगे. आज तो खबर आ गई ना, मार्स में नासा के लोग लैंड कर गए, यू नो. सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर रीचिंग. तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पास कागज पेंसिल है तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी. तो चलो आप एक टाइटल लिखो एक छोटे से पेज के ऊपर. Who am I? What am I? सोच के मत लिखना. अगर आप सोच के लिख रहे हो तो आप सेंसर कर रहे हो अपनी थॉट्स को. बस ऐसे ही लिख दो. अरे आई एम अ ग्रेट पर्सन, आई एम अ पायलट, आई एम अ दिस, आई एम अ दैट, जो भी आपका मन करता है आप लिखो. Who am I? What am I? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ. मैं वेट कर रही हूँ. आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ. अच्छा चलो, अब एक और पेज निकालो और आप लिखो व्हाट आई एम नॉट. मैं क्या नहीं हूँ. कुछ भी लिख सकते हो. मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बहुत लायक इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बदतमीज नहीं हूँ, मैं किसी को तंग नहीं करती. कुछ भी लिख सकते हो. लिखो व्हाट आई एम नॉट. मैं क्या नहीं हूँ. अच्छा लिख लिया. अब पेज पलटो, एक और पेज पे जाओ, फ्रेश पेज पे लिखना, नीचे नीचे मत लिखना. इट इन्फ्लुएंसेस योर माइंड. व्हाट आई वांट टू बी. Anything you dream of, you want to, you're practical, what do you really want to be? उसको लिखो. आपको पता है मैंने क्या किया? अब बस कर. मैंने क्या किया? What I want to be is what you are perceiving yourself. So it is the idealized self. Who am I? What am I? मेरी असलियत क्या है? What I am not, मेरे में क्या कमियां हैं? What I want to be, मेरा idealized self है. मैं ideally ये बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहता हूँ, जो भी आप बनना चाहते हैं. आप तीनों को जोड़ोगे तो वहां पहुंचोगे what I want to be. Right now,
इसके लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा? हार्डवर्क। हार्डवर्क कैसे किया जाता है? 24 घंटे पढ़ना नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि 24 घंटे पढ़ते जाओ। नहीं, 24 घंटे नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ओके, अच्छा, और मैं क्या कहूँ? मैंने कहा क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम मैनेजमेंट करना है, वो नहीं हो पाता। मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे पास बहुत बच्चे काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन टेस्टिंग के लिए भी आते हैं। आप करियर चॉइसेस की बात कर रहे थे, मैं करियर चॉइसेस में एप्टीट्यूड टेस्ट्स करती हूँ और आपकी पर्सनालिटी से मैच करती हूँ कि आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। फर्स्ट थिंग इज रियलिटी में आप क्या हो और क्या नहीं हो, आपका टाइम मैनेजमेंट बताएगा। तो क्या हुआ, अभी सोती हूँ ना, ठीक है ना, 11 बज गए, अरे अभी 11 ही तो बजे हैं, ठीक, चलो चैटिंग करे। अच्छा एक और साइड देखूं, अभी तू होल्ड कर, ठहर जा, मैं देखूं। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, साथ में किताब पढ़ी है यहाँ। मम्मी आई, देख रहे अभी तक सोए नहीं हो, और क्या कर रहे हो? पता है 2 बज गए, फिर सुबह कैसे उठोगे? आप जाओ ना, मेरे कमरे में मत आया करो। और किताब निकाली, मैं तो पढ़ रही थी, मैं तो पढ़ रहा था, मैं तो पढ़ रही थी, सच्ची मम्मी, गॉड 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 प्रॉमिस, मैं पढ़ रही थी। मम्मी गई, फिर शुरू अपनी, जो भी आप साइट्स पे जा रहे हो या आप गेमिंग कर रहे हो, आप धीरे धीरे एडिक्ट होते जा रहे हो। आप में एक नशा आता है, इंस्टा पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, कहीं भी। आजकल तो और आपकी बहुत ज्यादा अच्छी साइट्स आ गई हैं, दैट इज ऑल योर सोशल मीडिया। फिर आप जूम पे भी लगा सकते हो, 4-5 लोग इकट्ठे बातें भी कर सकते हो, कहीं भी व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, सो मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। लेकिन मैंने तो ये बनना है, कैसे बनना है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एटीट्यूड है, हो जाएगा। अरे यार 4 मई, अरे यार दिस गवर्नमेंट इज सो गुड, 4 मई, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल डू इट। अच्छा, कैसे हो जाएगा? जरा आज एक और कागज लेके बैठो, टेक अ पेपर एंड अ पेंसिल and see whatever subjects you have. Okay, you have accounts, you have maths, you have BSc, you have eco, micro, macro, whatever you have, or Indian economics, and you have statistics. Okay, maths, MATHS dot. Tutors or maths. सिर्फ उसमें एक सब्जेक्ट है अरिथमेटिक, एक सब्जेक्ट है अलजेब्रा, एक सब्जेक्ट है ज्योमेट्री, एक सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री, एक सब्जेक्ट है कैलकुलस, एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। 6 subjects is equal to MATHS मैथ्स। बिना प्रैक्टिस करे तो आने नहीं वाला। Till you don't eat maths, talk maths, walk maths, speak maths, sleep maths, practice नहीं करोगे तो होने नहीं वाला। And this is one guy, maths, will get you a lot of marks. ख्वाब देखते हो ना, 98%, 95%, 96%, ख्वाब देखते हो, कहाँ से आने वाले? वे हो जाएगा। ये एटीट्यूड ले डूबता है। उस वक्त क्या होता है, फिर एग्जाम से पहले पहले उल्टी आ रही है, पेट दर्द हो रही है, नींद नहीं आ रही, लर्न नहीं हो रहा। और मैं किताब खोलती हूँ ना तो मुझे लगता है सब कुछ आता है, और मैं किताब बंद करती हूँ और पता है मुझे कुछ नहीं आता। हाय मेरा क्या होगा? So many people can take to drugs, so many can take to smoking, so many can take to different things. And some kids are taking medicines to alter their special dates, which are hormonal dates. उससे भी खराब किया
गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट क्या कहता है, सारे टेस्ट क्लियर है, पता नहीं मैम आपकी बेटी को क्या हुआ है या आपके बेटे को क्या हुआ है, काउंसलिंग करवाइए। अब काउंसलिंग तो हो रही है लेकिन टाइम तो कितना कम है। सो व्हाट इज द मेथड? फर्स्ट मेथड इज टू रियलाइज द रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी? इस सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स हैं, लिखो, कागज पेंसिल लो, टेक अ पेपर, ओके। इस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स हैं, इतने। इस सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स हैं, इतने। एड अप करो, 140 चैप्टर्स। नाउ काउंट कितने दिन रह गए। maybe 10 days of February, right? 31 days of March, 31 days of April, 62 and 10, 72, okay? 72 days and 164 chapters, या 140 chapters, 120 chapters लगा लो। Now divide this and find per day कितने chapters होने चाहिए, तब जाके काम होगा। इसी में प्रैक्टिकल फाइल्स बननी है, इसी में प्रोजेक्ट फाइल्स बननी है, इसी में अभी प्रैक्टिकल्स हो जाने हैं आपके। And so many days are going to be lost on that only. मैंने तो वो बनना है, मैंने तो वो बनना है। Reality is time management. Reality is कि रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो नींद आती है, that is called nocturnal sleep. मैं नहीं कह रही, रिसर्च कह रही है। And this sleep gives maximum rest to the brain as compared to the rest of the sleep. So आप अगर देखें सारे अपने गैजेट्स, तो उसमें रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, राइट? आप सोते हो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। It is 1 AM not PM. It is 12 AM not PM. 12 बजे डेट चेंज हुई तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो क्या मतलब हुआ, एक रात पहले आप सोए ही नहीं हैं, दूसरे दिन फिर एक रात पहले आप सोए ही नहीं हैं, तीसरे दिन फिर एक रात पहले आप सोए ही नहीं हैं, जाने कितनी हजारों रातें आप नहीं सोए। उससे क्या होगा, ब्रेन वीक, worn out, overused, used, abused, आपने उसको रेस्ट नहीं दिया। नॉक्टर्नल स्लीप तो खैर ली नहीं, वो तो छोड़ ही दो। मेरी क्या एडवाइस होती है, 10 बजे तो कोई सोता ही नहीं है आज। अरे यार बुढ़ी है डॉक्टर ब्रूटा, पुराने जमाने की बातें करती है, 10 बजे, कल को कहेगी 9 बजे सो जाओ, कल को कहेगी 8 बजे सो जाओ। एक जमाना था when children were supposed to sleep at 8 o'clock at night, right? I don't talk of that zamana. I only say I am practical. I will live with you, with your zamana. You may find me very old physiologically, physically, but I am your student. आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स की मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरा मकसद ही नहीं है कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूँ। I don't criticize you. I learn. Then I judge for myself. Am I doing the right thing? If I am doing the right thing, मैं आपसे सीख ली. But if I'm not doing the right thing, then I think you need to do the right thing because you still have some dreams to fulfill. ऐसा नहीं है कि मेरी ड्रीम सारी फुलफिल हो गई है तो मैं खत्म हूँ, जी नहीं, मेरी भी बहुत सारी अभी ड्रीम्स रहती हैं, मैंने भी पूरी करनी है। बस सवाल ये, प्रियंका मैम करने दें मुझे ड्रीम पूरी, तब ना रोज एक नया प्रोफेशन बता देंगी मुझे कि
डॉक्टर ब्रूटा आपको पता है आजकल ये प्रोफेशन चल रहा है, इसका पैकेज इतना है, सच्ची इतना है, तो मैं वो सीखूं? मैं नहीं, मुझे नहीं सीखना। Why? I am happy where I am, but I want to progress with happiness and achieve something. So if I want to see a dream and I want to achieve that dream, and if I want to be going through that progress, then I need to be happy. And the way I can be happy is to look after my health as well as my brain. How can I do it? With time management. इतने बजे अगर मैं स्कूल से वापस आई हूँ, अभी मैं अपना टेलीफोन नहीं खोलूंगी, अभी मैं अपना लैपटॉप नहीं खोलूंगी, हाँ मैं टीवी खोल लूंगी, मैं खोलती हूँ टीवी और साथ साथ में खाना खाती हूँ. I utilize that time by dual tasking. मैं उस समय टेलीफोन पे बात भी नहीं करूंगी फोन पे, क्योंकि मैं टीवी देख रही हूँ. फर्क इतना, you may watch some web series, I may watch some news, very fond of what is happening around me, okay, and I will not look at web series while I'm having food. मेरे लिए वही बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि मेरा जीके, मेरा जनरल नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेरे आसपास क्या हो रहा है, जनरल अलर्टनेस मेरी वहां से आ रही है न्यूज से, तो मैं जरूर सुनती हूँ. साथ में मैं खाना खा लेती हूँ, और अगर मम्मी आके बैठ गई पास में या दादी जी आकर बैठ गई पास में, तो मैं बोलती हूँ उनको, बताती हूँ, मम्मा ये हो रहा है, देखो वो ये बता रहा है. दादी को बताती हूँ, दादी जी ये हो रहा है, वो कहती हैं हाँ बेटा मैं सुन सकती हूँ. Actually, what am I doing? I'm also conversing with them, but I'm rehearsing, I'm remembering what the news is, because I'm repeating it. तो जीके मेरा बैठ जाता है मेरे अंदर. तो फिर क्या होता है, जब मैं टीचर्स से बात करती हूँ अपनी, तो मेरे टीचर्स कहते हैं हाउ इज शी सो अलर्ट, हाउ डज शी नो कल ये हुआ वो हुआ, हाउ डज शी नो फार्मर्स का क्या चल रहा है, हाउ डज शी नो लाल किले पे क्या हुआ था. तो मेरे को पता है, क्योंकि मैं 2 बार खाना खाती हूँ, दोनों बार मैं न्यूज सुनती हूँ, तो वो मेरे अंदर आती है. उसके बाद जब मैं खाना खा लेती हूँ, मेरी रिलैक्सेशन भी साथ में खत्म हो गई है. I open up my diary and see आज क्या 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 हुआ था स्कूल में, क्या पीरियड्स थे, मैं अपना टाइम टेबल देखती हूँ. उस समय मैं सोचती हूँ उस टीचर ने क्या कराया था, उस टीचर ने क्या कराया था, उस टीचर ने क्या कराया था, ये वाला मुश्किल कराया था. मैं उसको पहले पकड़ती हूँ, बिकॉज माई माइंड इज फ्रेश एट द मोमेंट. मैं उसको पकड़ती हूँ एंड आई डू माई स्टडीज. एक बच्चे ने मुझे कहा एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो, नसीहत भी बहुत अच्छी देती हो. फिर सपना मैम ने उसे डांटा, डॉक्टर ब्रूटा से ऐसे बोलते हैं. मैंने कहा बोलने दो ना, मेरा दोस्त है, मेरा यार है वो. तो कहता है कि आपने कभी ये सोचा कि 4 बजे ट्यूटर ने आ जाना है, मुझे एंजाइटी होती है, उसका भी तो होमवर्क कभी रहता है. मैं कहा क्यों रहता है यार, कल नहीं किया था ना, मैं तुझे तो हो जाएगा, कर लूंगा ना. ये एटीट्यूड आपको टेंशन में ले आता है. आप सोचते हो कि मैं ट्यूटर का होमवर्क करूं, स्कूल का होमवर्क करूं, अपनी रिवीजन करूं, मैं क्या करूं. मैं कहती हूँ जब ट्यूटर आए थे, चले गए थे, होमवर्क वहीं बैठ के कर लेते, जान छुट्टी. पर आप नहीं करते. मुझे पता है टेबल पे बुक्स भी खुली रहती हैं, आप बंद करके भी नहीं रखते. क्यों? क्योंकि आप दिल से नहीं पढ़ते. आप पढ़ते हो क्योंकि ये मुसीबत है. आप पढ़ते हो क्योंकि मम्मी कह रही हैं कि ट्यूटर ट्यूशन ले ले. आप पढ़ते हो क्योंकि पापा कह रहे हैं कुछ पढ़ ले, कुछ पढ़ ले.
और मुझे इतना दुख होता है आज जो मैं आपके साथ बोल रही हूँ, ईश्वर जी ने मेरे साथ थोड़ा न्याय कम किया है, बिकॉज आई नो ऑल ऑफ यू आर हाई IQ, आई एम नॉट। और मुझे शर्म नहीं आती बताते हुए। मेरी क्लास फेलोज, मेरे टीचर्स, मेरे कॉलीग्स, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरा मजाक उड़ाते थे, डफ है, ना मैथ्स आता है ना साइंस आती है, क्या करेगी। स्कूल में मेरी मदर को बोला मैथ्स टीचर ने, शी वांट्स टू बी अ प्रोफेशनल गर्ल, शी वांट्स टू बी अ करियर गर्ल, शी डजंट नो मैथ्स एंड साइंस, शी इज अ डफर, व्हाट इज शी गोइंग टू डू इन लाइफ, व्हाट एम आई गोइंग टू डू इन लाइफ। सच में ईश्वर जी ने मुझे ब्रेन क्यों नहीं दिया? व्हाट डू आई नीड फॉर मैथ्स एंड साइंस? लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, राइट, कंप्यूटेशनल एनालिसिस, ये सब आना चाहिए, नहीं आता। अब कहाँ ईश्वर जी को खोजूं, उनसे लड़ूं कि ये फैकल्टी मुझे क्यों नहीं दी, आपको दी, मुझे नहीं दी। अब इसी में मैं टाइम गुजार दूं, नेगेटिविटी ले आऊं, मुझे तो कुछ नहीं आता। आता है यार, सिर्फ मैथ्स एंड साइंस थोड़ी है लाइफ में सब कुछ। जो कर सकते हैं वो करते जाएं, जो नहीं कर सकते वो दूसरी तरफ चल पड़े। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। जैसे कोविड में लोग मुझे कहते हैं क्या पढ़े, स्कूल तो बंद हो गया। कहाँ बंद हुआ? इतना मजा आ रहा है, सुबह उठ के ठंड में जाना नहीं पड़ा बस स्टॉप यार, यूनिफॉर्म नहीं पहननी पड़ी, नीज में ठंड नहीं लगी, लेग्स में ठंड नहीं लगी, मम्मी से झगड़ा नहीं हुआ कि कैप पहनो, मैंने नहीं पहननी कैप। लुक एट द एडवांटेज ऑफ इट यार, क्या कर रहे हो? फिर तुमने क्लास अटेंड करी, मुझे पता है जो गलत किया आपने, आप बिस्तर में क्लास अटेंड कर रहे हो, आपने ब्रश भी नहीं किया, बस अटेंडेंस लगा दी, उसके बाद लेट देखते रहे। फिर 11 बजे के आसपास मम्मी को बोला मेरा सिर दर्द कर रहा है और मेरी ये गर्दन में दर्द हो रही है। पोस्चर ही गलत है, पोस्चर ही गलत है। सो आपका सेल्फ डिसिप्लिन एंड आपका टाइम मैनेजमेंट इज मिसिंग। यू आर नॉट रेडी फॉर द क्लास। You should have had your bath. You should have sat in the study room. You should have sat on a study table, okay, and then attended that class and not in bed. क्या है, सारे पेरेंट्स की तरह आप बोलती हो। मम्मी भी यही कहती है, उठ जा, नहा ले, खा ले। मैं बता रही हूँ, अगर आप उठ जाते तो रिसर्च को प्रूव करते, क्योंकि रिसर्च कहती है अगर आपकी स्पाइन वर्टिकल है, आप अलर्ट हो, आप अपडेटेड हो, आप पॉजिटिव हो। पर अगर आप पलंग पे बैठ के भी पढ़ रहे हो तो यू बाउंड टू स्लाइड। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कर्व है, जब कर्व आएगा पहला साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मूड गया तो अटेंशन गई तो कंसंट्रेशन गई तो जितनी भी इंफॉर्मेशन क्लास में से मिल रही है, एक एटीट्यूड होगा बकवास है, दूसरा एटीट्यूड होगा पता नहीं अभी क्या बोल रही थी, मैं तो भूल गया, अब मेरा लिंक टूट गया। Then you lose interest in the class. Then students come and tell me, मैम कुछ होता तो है नहीं क्लास में, मैम कुछ कराती तो है नहीं क्लास में। हाँ, I really wonder, मैम कुछ नहीं कराती क्लास में, then how does she spend that 50 minutes, 50 minutes? ये आपका एटीट्यूड है। अरे इससे नहीं समझ में आया तो ट्यूटर ने तो आना ही है, ट्यूटर से समझ लेंगे। यू पेइंग डबल, यू पेइंग योर स्कूल फी एंड यू पेइंग योर ट्यूटर फी, व्हाट फॉर? यही अगर आप अलर्ट होके पढ़े, टाइम मैनेजमेंट करें, अपनी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकल रखें, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हॉरिजॉन्टल हुई आप सोते रहो, ये ध्यान रखना। So I have said
देयर इज नो हार्म इन ड्रीमिंग. ड्रीम देखना बहुत सही बात है, उससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में. सपना मैम का तो नाम ही सपना है, देख लो, तभी तो यहाँ पहुंची है. सपने ही देखती होंगी, हार्ड वर्क करती होंगी. हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि अपनी जान ही गंवा दें. आपकी एज में प्ले, टीवी, फ्रेंडशिप्स, पढ़ाई, आप देख लो किस किस को कितना टाइम देना है. देना है, मैंने मना नहीं किया. एडिक्ट नहीं बनना. आई हैव मोबाइल एडिक्ट्स, आई हैव गेमिंग एडिक्ट्स. एंड अब तो आपका WHO भी रिकग्नाइज करता है कि दिस इज अ डिजीज, just like alcohol addiction, just like drug addiction, gaming, mobile, all these sites, these are all addictions. These are like drugs. So you have to think, मैंने अपनी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना. मैं तो समझ ही नहीं सकी कि नरेश भाई जो हैं या राकेश सर जो हैं या उनकी वाइफ है या सपना मैम है, ये मेरे को क्यों बुलाते हैं. I may have worked very hard because I am a doctor, but I am not a topper. ये बात आप सोचना. Do I want to be a topper and get bored in life कि मैं 24 घंटे पढ़ती ही रहूं, खेलूं नहीं, कूदूं नहीं, मूवीज नहीं देखूं, you know, सारी वेबसाइट्स ना देखूं? ऐसे कैसे हो सकता है. मुझे तो घूमना है, मुझे तो पहनना है, मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे तो कोका कोला पीना है, बर्फ डाल के पीना है, दिसंबर के महीने में पीना है, मुझे आइसक्रीम खानी है, जनवरी में खानी है, मुझे बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, मुझे फ्रेंड्स को भी बुलाना है. लेकिन लेकिन मुझे अपना सपना भी पूरा करना है. माई ड्रीम, and my dream was to become a psychologist. My dream was to heal people who are unhappy. My dream is to reach out to people who cannot make career choices, how to help them make career choices. आपको मैं आज दो बातों से आगाह करूंगी, warning you. Sometimes we are very good in a particular stream and we also want to pursue a career through that stream, but we don't, because पापा मम्मी ने कहा है कि इसको ये करवाओ. तो आपकी पापा मम्मी से पटती नहीं, तो आप नेगेटिविटी में हैं, तो आप नहीं करना चाहते, जो पापा मम्मी कहते हैं उसका उलट करोगे. दिस इज वन थिंग वी शुड अवॉइड. अनदर वार्निंग इज, जो प्रियंका मैम ने पॉइंट कहा था वो मेरे को याद रहे, शुक्र है आ गया याद, कि डोंट रन आफ्टर अ स्ट्रीम जस्ट बिकॉज माय पेयर्स आर रनिंग आफ्टर. मेरे फ्रेंड्स जा रहे. संस्कृत क्यों ली? मेरी सारी फ्रेंड्स ले रही हैं. फ्रेंच क्यों ली? मेरी सारी फ्रेंड्स ले रही हैं. साइंस क्यों ली? साइंस नहीं लेते, इज्जत का कचरा हो जाता. वाई? बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है इफ यू आर इन द साइंस स्ट्रीम. तो इसलिए अपना सारा जोखम में डाल रहे हो, सब बर्बाद कर रहे हो अपना. मैथ्स तो आता नहीं, साइंस तो आती नहीं, अगर आती है पर्सनालिटी मैच नहीं करती क्योंकि मेहनती नहीं हो. पर्सनालिटी भी मैच करो. यू मे बी वेरी गुड इन साइंस एंड मैथ्स, बट यू आर नॉट persistent, you're not consistent in your personality. जल्दी घबरा जाते हो, पेशेंस नहीं है. अगर मैं किसी को कहूँ मैथ्स का सम 3 रजिस्टर्स में करो, 3 रजिस्टर्स में, हाँ, आपने एक एक्सरसाइज करी, छोड़ दो, खत्म हो गई, बंद कर दो. आप दूसरे रजिस्टर में उसको दोबारा करो, बंद कर दो, घूम आओ. 1 घंटा कुछ और कर लो, 2 घंटे कुछ और कर लो, तीसरा रजिस्टर लाओ, मैथ्स की वही एक्सरसाइज बिना देखे अब दोबारा करो, तिबारा करो. आप तो पागल, इतना टाइम पड़ा है कि मैं 3-3 बार एक ही एक्सरसाइज करूंगा? बेटा ट्राई कर लो, फिर क्या होगा, भूलेगा ही नहीं कभी. कई बार होता है ट्यूटर, टीचर, स्कूल में, घर में
कुछ भी समझाते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है। टीचर चले गए, किताब बंद या खुली छोड़ दिया, कुछ और करने चले गए, कुछ और नूडल्स बनाए, नूडल्स खा लिए, कुछ और खा लिया, मोमोज खा लिए, फ्रेंड को फोन कर लिया, कुछ कर लिया, मोबाइल पे कुछ कर लिया, लैपटॉप पे कुछ कर लिया। दूसरे दिन सर आ गए, सर ने कहा वो मैं करा गया था वो कर ली। हाँ सर 2 बार की है, मैं तो एक बार करने वाला था, ये तो डॉक्टर ब्रूटा ने जबरदस्ती मेरे से दूसरी बार करा ली। अच्छा बेटा मेरे सामने करके दिखा, मैं देखता हूँ कि पूरी एक्सरसाइज को कितना टाइम लगता है, सो दैट अब तुम स्पीड भी पकड़ो थोड़ी सी। तीसरी बार करने लगा, सर मैं तो भूल गया, because there is something known as recent memory, but abstract reasoning is a little less as an ability, तो वो दिमाग से निकल गया। यही अगर 3 बार की होती तो imprint on the memory is much stronger। ये बहुत important point है, revision, that's very important। I didn't know maths, तो मैंने ले लिया, तो मैं उसको करती रहती थी। मेरी मदर बहुत वरीड रहती थी, तो हर समय मैथ्स ही करती रहती, फिर बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा? मैंने कहा मम्मा वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मेरे को ले डूबेगा मैथ्स, इसी से मैं ऊपर आऊंगी। क्योंकि हमारे टाइम में ह्यूमैनिटीज में मार्क्स नहीं आते, अब तो आप पता नहीं इंग्लिश में ही 98 ले आते, जिसके 60 आते थे कहते थे ये तो स्कॉलर है इंग्लिश की, 60 मार्क्स ले आई आउट ऑफ 100। You have to understand that। So, मैं वो करती 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 तोता बन गई, क्योंकि मैं तो 5 बार करती एक एग्जाम, पूरी किताब मैंने 5 times, राइट। सो अब वो एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस का एक सम आ गया, अब वो पता है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, इसका ये आंसर है, पता है मेरे को, स्टेटमेंट भूल गई, डफर हूँ। फिर मैंने एक लिखा, काटा, उसके ऊपर रीराइट किया, काटा, उसके ऊपर रीराइट किया, छोड़ दिया। मैं कहा बाय वेस्ट टाइम, आंसर तो आ गया 4%, बट स्टेटमेंट इज नॉट राइट, पता था मैं कुछ भूल रही हूँ। पेपर सारा खत्म कर लिया, सडनली वो दिमाग में आया कि अब मैं बहुत ऊंचा बोल गई एग्जामिनेशन हॉल में, आ गया। एवरीबॉडी लुक्ड एट मी, ये पागल कौन है? So I had 5 marks out of 100 in my first class test, and when I did the board, I had 100 on 100. This was only hard work. आज पूछ लो अरुणा ब्रूटा को कोई मैथ्स आता है? इल्ले, कुछ नहीं आता। It was only that part that I worked and worked and worked. So you have to understand that बिना हार्ड वर्क के तो स्विमिंग भी नहीं करनी आपने, डाइव नहीं कर सकेंगे, बोटिंग भी नहीं कर सकेंगे बिना हार्ड वर्क, स्पीड नहीं पकड़ेंगे बिना हार्ड वर्क, डांस नहीं कर पाएंगे बिना हार्ड वर्क। आप डांस ऐसे करो, ऐसे, तो क्या हार्ड अपने दिल से किया हो और प्रैक्टिस करी हो तो लोग अश अश तालियां मारेंगे आपके डांस को। Why did I bring this example of dance? ये तो पढ़ाई नहीं है ना, है। कोई भी सब्जेक्ट एक पढ़ाई है। What is पढ़ाई? तपस्या। कहीं भी म्यूजिक कर लो, वोकल म्यूजिक कर लो। पंडित जसराज जी से मैं मिली, मैंने उनको बोला इस राग में ऐसे क्यों होता है, इस राग में ऐसे क्यों होता है? तो कहते हैं गाती हो? नहीं, सीखती हूँ, आता ही नहीं। क्यों सीखती हो? 5 घंटे
25 साल रियाज नहीं करोगी तो सा भी नहीं लगा सकोगी। अब किससे लड़ूं कि मेरे को गाने की भी कोई एप्टीट्यूड ईश्वर ने नहीं दिया, मैथ्स का नहीं दिया, साइंस का नहीं दिया, गाने का नहीं दिया, पेंटिंग का नहीं दिया, आर्ट वर्क का नहीं दिया। ये नेगेटिविटी है। बोलने का दे दिया, चल तू बोल। साइकोलॉजी का दे दिया। So what I'm trying to tell you is, don't underestimate any subject. Don't underestimate any stream. Don't think कि ये जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं ये ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। डफर। दिल से करोगे तो डफर नहीं होगे, एंड हार्ड वर्क करोगे तो आगे तो क्या, आगे तो क्या, आगे तो क्या, चलते ही जाते पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। स्कूटनिक में बैठ के who knows कहाँ पहुंचते। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ना आए, इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। बात करने में झिझकोगे, मैं ये बोलूं कि ना बोलूं, क्या होगा, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, पर दिल से बोलोगे। दिस इज वेरी। आई विल ऑल्सो लाइक टू से, पढ़ने के तरीके से एक तो पलंग पे नहीं पढ़ना। Now I'm synchronizing everything that I have said to you. One, not to keep awake beyond 12, and I say 11, क्योंकि 1 घंटे की नॉक्टर्नल स्लीप ले लो, ब्रेन को रेस्ट मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी इज हाई वोल्टेज, okay? It is the same technology that you have in the microwave oven. So you're sitting in the microwave oven at night, put your gadgets outside your room. Put the charger away. It should not be in your room. Have an FM radio that doesn't have internet. गाने बजते रहे, धीरे 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 नींद आने लग जाएगी। पहले 15 दिन बहुत मुश्किल होते हैं, फिर उसके बाद नींद आने लग जाती है। तीसरी बात, उठो जब भी, मुंह धो, ब्रश करो, नहाओ। Why? Blood supply by rubbing the towel gushes into the brain. Memory is revived. Alertness is there. Sit on the study table so that you can keep your spinal cord vertical. मैंने ऐसे नहीं कहा अड़ के बैठ जाओ, ऐसे, पर मैंने ऐसे भी तो नहीं कहा, ऐसे कहा। आप मेरी बात सुन लो, आप ऐसे बैठ के पढ़ लो। ये Suddenly, your friend rings you up and you pick up the phone. Yeah. हाँ, तुझे पता है मैम हॉस्पिटलाइज हुई है? क्या कहा? What have you become? You've become alert. How have you become alert? You put your spinal cord vertical. आप अपने में change देखो. You see that? This is very important for you to understand. Now do kinesthetic learning. What is kinesthetic learning? A lot of your teachers will say, हमारे notes पढ़ लेना. What you need to do is read your NCERT textbook. Read, not read. मन में नहीं. बोल बोल के, उंगली चला चला के. This is a motor of the body. Your voice box is a motor of the body. What is studying? Psychology, mental work. So 2 psychomotor activities. Voice box काम कर रहा है, उंगली हाथ काम कर रही है। उसके बाद एक पैराग्राफ के बाद अपना हाथ ऊपर करो and do self talk.
ये पैरा मुझे क्या कह रहा है, ये पैरा मुझे ये कह रहा है, ये कह रहा है, टच, काइनेस्थेसिस। अब लिखो एक रजिस्टर लेके मेन पॉइंट ऑफ दैट पैरा, देन अगेन खत्म हुआ सेकंड पैरा। अब ये मुझे क्या कह रहा है, अब ये मुझे ये कह रहा है, ये कह रहा है। हाँ, सेल्फ टॉक हो रही है। पहले क्या कह रहा था, पहले ये कह रहा था, ये कह रहा था, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, आ गया। अब उसका मेन पॉइंट क्या कर रहे हो, you are also learning, you're reading, you're attending, you're concentrating, but you're also organizing the first para with the second para. So you are organizing your material. इस तरह से पूरा चैप्टर पढ़ डालो, बोल डालो, लिख डालो, उठ जाओ, 10 मिनट चलो, कुछ खा के आओ, अमरूद खा लो, एप्पल खा लो, बहुत ज्यादा बोर हुए हो तो नूडल्स खा लो, बट नूडल्स ना खाओ तो अच्छा है। मैदा slows down information processing in the brain. Atta facilitates information processing in the brain. Research के लिए many cases. Okay, so you can trust what I'm trying to tell you. I am not trying to motivate you. This is I'm telling you a fact. उसके बाद दोबारा आके 10 मिनट के बाद, माइंड यू 10 मिनट, घंटा नहीं, 10 मिनट के बाद आके read the lesson again, उंगली चलाओ, and then say ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था, आ गया आ गया आ गया, सेकेंड पैरा, अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है, आ गया आ गया आ गया, थर्ड पैरा, ओ गॉड, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, हाँ यार ठीक है ठीक है, पहले क्या कह रहा था, ये कह रहा था, ये कह रहा था, उससे पहले क्या कह रहा था, ये कह रहा था, ये कह रहा था, हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया, and you read through the lesson again. Now read through the points which you have written on your register. 15 मिनट घूमाओ, खा लो, अब एक नया रजिस्टर लेके आओ, मार्जिन ड्रॉ करो, क्वेश्चन लिखो उसी चैप्टर में से जो भी आपको या टेस्ट पेपर से या आफ्टर द बिहाइंड द लेसन जो होते हैं, एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, और घड़ी देख के लिखो, स्टार्टेड एट, आंसर लिखो और लिखो फिनिश्ड एट, आपको लगे 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, तो मैंने कितने मिनट लिए, अब बुक खोलो, अरे यार सॉरी ये पॉइंट रह गया, वो जो मार्जिन ड्रॉ किया था किसी अलग कलर के बॉल पॉइंट से उसको पॉइंट को लिख डालो, कभी भी भूलोगे नहीं। तो एक लड़का 12th का मुझे कहता है आप पागल हो, मैंने कहा तुझे आज पता चला, मैं तो हुई पागल। कहता आज मिले हो तो आज ही मिलोगे ना, आज ही कहूंगा। आपको पता है मेरे कितने चैप्टर्स हैं, आपकी तरह मैं पढ़ने लग गया तो होली मेरी तैयारी। ओके, मुझे बता के आप कैसे स्टडी करते हो, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो अब हो गया ना लेसन, फिर अपना रजिस्टर लेके आओ, क्वेश्चन के आंसर लिखो। मैंने कहा था ना आप पागल हो, मैंने क्यों, कहता मैंने लर्न थोड़ी किया, अभी तो मैं बैठूंगा, पढ़ूंगा, सोचूंगा, लर्न करूंगा। मैंने कहा तो मेरे मेथड में तो लर्निंग है ही नहीं, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग इन माय मेथड, सो यू सेव दैट टाइम। हाँ ये तो देखा मैंने कहा तो विल पावर नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, कह देना आसान है, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन अगर पॉजिटिविटी से पढ़ते हो फटाफट हो जाएगा। You don't need to learn anything. So these are some of the study skills for you, for your career, for your future. Whether you want to be a dancer, a music composer, a digital musician, whatever you want to be the latest. But don't do it to please your mother. Don't do it to please your father or to impress him. मैं 4 दिन ऐसे पढ़ लूंगा ना तो पापा मुझे मैक खरीद देंगे, मुझे अपना लैपटॉप चेंज करना है।
फिर तो आपका गोल नहीं है ना, फिर योर गोल इज ओनली टू अक्वायर मटेरियल थिंग्स। और जब आपका पैकेज इतना बन जाएगा तो फिर मटेरियल थिंग्स तो सारे ही आ जाएंगे। सो आई थिंक कि थोड़ा सा सोचो कि मैं फन एंजॉयमेंट के साथ साथ बैलेंस कैसे कर सकता हूँ अपनी स्टडीज। मैं कतई नहीं कहती एंजॉय ना करो, अब नहीं करा तो क्या मेरी उम्र में करोगे, करो, रज के करो, लेकिन studies should be fun. Study with a positive attitude कि मैंने जो करना है अपने लिए करना है, मैंने जो करना है किसी पे एहसान नहीं करना, किसी को खुश नहीं करना, मैंने अपने को खुश रखना है। मैं खुश, मैं स्वस्थ, मैं पॉजिटिव तो मेरी मेमोरी पॉजिटिव, मेरी मेमोरी पॉजिटिव तो मेरा पोस्चर पॉजिटिव, मेरा पोस्चर पॉजिटिव तो सारे टीचर्स कहते हैं यार इसको क्या हुआ, लॉकडाउन में ही चेंज हो गया। वाओ, 4th May, चैप्टर्स गिन लो, दिन गिन लो, मैं कुछ नहीं कह रही। अगर इस एटीट्यूड से रहना हो जाएगा, सारी रात जाग के 2 किताबें फिनिश करके नेक्स्ट डे एग्जाम देंगे तो ब्लैकआउट तो होगा ही होगा। कभी नाइट नहीं लगाते किसी एग्जाम से पहले, नेवर। मेमोरी लॉस हो जाएगा बिकॉज यू आर अब्यूजिंग योर ब्रेन। सो विद दिस आई विल से, बड़े ख्वाब देखो, बड़ा अच्छा करो, बिना मेहनत के कोई चीज का मजा नहीं आएगा, and you will be a big shot. Each one of you, even my girls who are listening to me, don't sit at home. Make your career, only then think of marriage. I'm not telling you don't fall in love. Fall in love. लेकिन अपनी पढ़ाई पहले, करियर पहले, बाद में एनी मैन। नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करनी किसी से। Good luck to you. Tell me that you will enjoy yourself with studies and with romance with your mobile, romance with the laptop, romance with the screen, romance with Sapna ma'am, romance with Priyanka ma'am. Thoda sa romance mere liye bhi. Thank you. God bless you. May God always be with you. You're very lovely children. I have loved you lots and lots and lots. Bye. Take care. Thank you so much, ma'am. And clearly, I have listed it down, the 10 takeaways of the session. Number 1, life is a work in progress, and you need to understand that. Number 2, it's not about perfection, it's all about progress and being better each day. So, third is be better each day by learning every day. Fourth, there has to be some masala of self discipline. Fifth, time management is important, otherwise, your skills can go waste. 6, it's very important to understand your personality type that matches with your career to take a sensible decision. 7th, it's all about practice and persistence. Rising, falling. I think our ECG liver looks like that. So life is all about it. 8th, it's all about intelligence. It's all about hard work and efforts that you are putting in. 9th, our education. Hats off and lots of love to Goddess Saraswati ji. We often talk about Lord Ganesha. We talk about Goddess Lakshmi. But I think all of us, we had this Basant Panchami some days back. We should first talk about Goddess Saraswati, the knowledge that actually it's a tapasya and takes you forward. And the last, we cannot please everybody. So with that, ma'am, thank you so much for this wonderful session. And I would now request our co-host to share an e-memento with Dr. Aruna Broota, ma'am. Just a small gesture of gratitude from IMS Ghaziabad University Courses Campus. Thank you very much. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. We would also request Jitendra ji to please put that e-memento.
Thank you so much, ma'am. Thank you. And we are very sure that we will be having this long-term association with you in the upcoming years as well. So thank you once again. God And in the at the end of this show, I would like to propose vote of thanks. In fact, I would like to propose vote of thanks on behalf of all the faculty and staff members at IMS. So thanks to Dr. Aruna Broota for her words of wisdom and inspiring us, for the tips that she has given. And trust me, these are the tips that really work and that will make you successful and that will make you happy. Second, I would also like to thank our wonderful students who have joined us. And I'm sure you all have understood the relevance of career planning and how you can evolve. Even if you're a mediocre, you can evolve as a successful person. So thank you all our lovely students for joining in. Thirdly, I would also like to thank our IT team who are, with this, all is this happening because of the platform that we are having. Thank you so much for your coordination. Would also like to thank our counseling team here at the campus for making this possible, and to each and every member who has supported us in this program. So with that note, I would now request Dr. Aruna Broota and Dr. Sapna Rakesh, if they feel they can exit from this webinar, we will continue. All the students are requested to stay back for some information regarding the participation certificate. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Priyanka ji. Thank you, Dr. Broota. It was once again great. Ma'am, God bless you. God bless you. Thank you. All the participants who are watching us at the moment, I'm sure you might have got a feedback link in the chat box. All you're supposed to do is on that particular link, please mention your spellings very carefully because these are the spellings that we will be using on your participation certificates. So I'm sure that link has been shared. So I request each one of you to fill that link ASAP so that we can have your details, especially the spellings, and we can issue your participation certificate of this National Career Counseling webinar. I'm sure you will get all the certificates by 1st of March 2021. So with that note, thank you everybody for joining in. We are signing off, and once again, may God bless you all. Thank you.